Okay, so good evening, students. Yeah, so I have sent you some question, right? ये वीडियो ठीक है, कुछ tilted तो नहीं है? No, sir. Everything is fine. Okay, ठीक ठीक. चलो start करते हैं. I have sent you some question, right? So first we'll solve some question. 3 or 4 question I have sent you. Please see the WhatsApp group. First we'll solve some question, then we'll move towards our next chapter, right? So let's ask this question. Suppose the frequency of phonon. This question. Suppose the frequency of phonon in a 1D chain of atom is proportional to the wave vector. Please solve, everyone. Suppose the frequency of phonons in a one-dimensional chain is proportional to the wave vector if n is the number density of atoms and c is the speed of phonons, then the Debye frequency. We have to find the Debye frequency. Okay. So basically, he's saying that the frequency of phonon is proportional to the wave vector. So you can write like this, that is omega is proportional to k, right? And instead of the place of proportionality constant, question is saying let it is c. But c is not a speed of light here. Okay, please remember, c is not a speed of light. C is saying there's a c is a speed of phonons, right? Speed of phonons. Sir, Yes. will you please tell which question we are discussing? The first question I have sent you. The first question. The electric conductivity No, of no, no, no. copper. Suppose the frequency of phonon in one-dimensional chain of atom is proportional to wave vector. मिला सबको? Did you get? Should we know, sir? Year, can you tell year? एक्चुअली ये फाइल का पहला ही क्वेश्चन है, नेट दिसंबर 2014. सर ये 4th क्वेश्चन है फोटो के हिसाब से. यस सर, जून 2016 का नेट जेआरएफ. नहीं नहीं, दिसंबर 2014 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ. देखो एक क्वेश्चन होगा, ऊपर है या नीचे? Consider an electron in graphene. नो 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 नो. June 2016. ये मैंने अभी सेंड तो किया है ऑनलाइन ग्रुप में. यस सर. आप लोग को नहीं मिला है क्या? 4 क्वेश्चन मैंने सेंड किया है. मिल गया सर, वो पहले वाला शायद डाउनलोड कर लिए होंगे वो. Someone has sent it back. Please see this. नहीं, अभी मैंने ग्रुप में ही अभी सेंड किया है, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास. बाकी सबको शायद मिल रहा है ना? सबको मिल गया Okay, क्वेश्चन? sir. Okay, sir. Got it. हाँ हाँ. Sorry. Please see this. ओमेगा डी इक्वल टू n pi c डिवाइडेड बाय 2 या n pi c. n pi c डिवाइडेड बाई 2. अगर आप पाई इंक्लूड कर रहे हो तो 2 नहीं आएगा. वही सर, खाली n pi c आ रहा है. Exactly. Please let attempt everyone, then I will discuss this question. Okay. The answer is omega d is equals to n pi c. And if you are finding out the nu d, that is a frequency, means in the unit of hertz, then it should be what? Nu d is equals to nc by 2, right? Sir, हाँ. sir, even the question they mentioned the Debye frequency, we have to find the omega d or nu d means. Debye frequency is not- omega d. Actually, I'm telling you, actually, this question is a invalid question, but I have sent you. If you see, this is actually previous year question of the net exam, right? He has asked find the omega d, and the option was means after solving exactly accurately, option was not matching at all. So actually they have given the marks to all for this question, but we are solving and the actual answer is omega d is equal to n pi c. Okay. सर 2 भी दे रहा है. हाँ.
तो सर 2 दे रखा था इसमें, हाँ हाँ डिवाइडेड बाई 2। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जो ऑप्शन था ना उसमें जो क्लोजेस्ट आंसर था, द क्लोजेस्ट आंसर वाज n pi c by 2, but that's is not incorrect answer. Okay, so this is a correct answer. Omega is equals to n pi c. Please find out, everyone. हो रहा है सबसे? नो सर। हाँ, क्या वो प्रॉब्लम आ रहा है किसी को? Yes, sir. क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? देखो, ओमेगा इज टू सी के इज योर डिस्पर्जन रिलेशन, राइट? दिस इज योर डिस्पर्जन रिलेशन। ऑलराइट, किस डायमेंशन की बात की जा रही है? दिस इज अ वन डायमेंशनल चेन आइटम। सो बेसिकली आपको तुरंत क्या ध्यान आना चाहिए था? जी के डी के इज इक्वल टू व्हाट? एल अपॉन पाई डी के। ठीक है, जी के डी के इज एल अपॉन पाई डी के। सो फर्स्ट फाइंड द जी ओमेगा डी ओमेगा फ्रॉम हियर। जी ओमेगा डी ओमेगा कितना हो जाएगा? इट विल बी एल अपॉन पाई डी ओमेगा बाई सी, राइट? दिस इज अ number of quantum state between the range omega and omega plus d omega, right? And you have to find the Debye frequency. Just recall the derivation of Debye theory. What we have done? हमने वहां पर क्या किया था? इसको I told you that just d omega g omega d omega is equals to dn, 3n. right? I told you, बताया था ना, dn is equals to g omega d omega. और फिर हमने क्या किया था? इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया था इन द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 0 to ओमेगा डी। यही किया था ना, फ्रॉम 0 to n एंड फ्रॉम 0 to ओमेगा डी। बस यही तो करना है आपको। Sir, 0 to 3n ना? नहीं नहीं, 3n कहाँ? कल हमने डीजेनरे से फैक्टरी यूज अरे, किया था। तो फोनॉन्स की बात थोड़ी की जा रही है यहाँ पे। क्या बोला है? फोनॉन्स का नाम लिया है क्या? तो फोनॉन्स का नाम लिया है, बट वन डायमेंशनल के लिए बोला है ना इसने। तो 0 से 3n थ्री डायमेंशनल के 3 मोड ऑफ ऑसिलेशन आया था ना। बट अगर वन डायमेंशनल चेन ऑफ Okay. लैटिस है, दैट्स मीन यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to n। तो सर मैं इसमें फिर एक ही मोड होगा ना सिर्फ? हाँ, तो इसीलिए तो 0 से n कर रहे हैं ना। सिर्फ n आएगा, ना कि 2n और 3n, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ n आएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड व्हाट इज अवर जी ओमेगा डी ओमेगा? दिस वाज l अपॉन पाई डी ओमेगा बाई सी, राइट? फ्रॉम 0 to ओमेगा डी। n is equals to l upon pi c and it will be ओमेगा डी, है ना? डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करोगे ओमेगा, दैट इज ओमेगा डी। सो बेसिकली इट इज कमिंग ओमेगा डी इज इक्वल्स टू n अपॉन l पाई इंटू सी। यही आएगा। एंड वी नो दैट कैपिटल n अपॉन स्मॉल कैपिटल l, ये क्या होता है? ये व्हाट इज दिस बेसिकली? नंबर नंबर डेंसिटी, फोनॉन नंबर डेंसिटी। दैट इज ओमेगा डी इज इक्वल्स टू स्मॉल n पाई c। दिस इज द करेक्ट आंसर। सर यहाँ यही लॉजिक यूज किया है ना? अब मतलब वन डायमेंशन है, इसके वजह से n अपॉन l को हमने नंबर डेंसिटी हाँ हाँ बिल्कुल, देखो मैं ये हमने किया भी हुआ है। देखो, व्हेन इट इज n अपॉन l इन द वन डायमेंशनल, ये आपका नंबर डेंसिटी बन जाता है, ठीक है ना? फॉर द टू डायमेंशनल दिस इज n अपॉन l स्क्वायर, ठीक है ना? तो भी ये नंबर डेंसिटी होता है। नंबर डेंसिटी, हाउ हाउ डू यू डिफाइन द नंबर डेंसिटी? नंबर ऑफ एटम्स और वॉट एवर, जिसकी भी आप डेंसिटी निकाल रहे हो, divided by the, if you're talking about the one dimension, then divided by the length. If you're talking about the two dimension, then divided by the area.
And if you are talking about the 3 dimension, divided by the L cube. So here basically we are talking about the 1 dimensional, that means n capital N divided by the L. That will become this number density, right? Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. The next question is this one, June 2021. Please solve everyone. June 2021. The question is the total number of phonon mode in a solid of volume V. This question. देखो ये क्वेश्चन भी ना बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, राइट? This question will also be solved like that. Please solve everyone. Good question. Actually, this is a very good question. June 2021. Is there anyone who is not able to approach this? Yes, sir. चलो आपसे बात करते हैं, कहाँ प्रॉब्लम आपको आ रहा है? 1-to-1 ट्रेसिंग कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप मुझे बताओ. क्वेश्चन आप पढ़ो. The total number of phonons modes in a solid of volume V is 0 to omega d. इक्वल टू 3 है. इक्वल टू 3 है. ये तो बेसिकली आपको डेफिनेशन ही बता रहा है. जी सर. ये तो डेफिनेशन ही है. Where capital is the number of primitive cell, इसको छोड़ दो. Omega d is the Debye frequency and density of phonon mode is G of omega is equal to AV omega square. So basically the dispersion relation is G of omega is equal to AV omega square. ठीक है ना? Where A and V are both are constant. यही बोला है? जी सर. Where A is greater than 0, if the density of the solid doubles in a phase transition, then the Debye temperature will. ठीक है ना? Debye temperature पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? When the density is double. देखो यहाँ पर डेंसिटी, किस डेंसिटी की बात हो रही है? Can anyone tell? किस डेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पर? क्वेश्चन में सॉलिड लिखा हुआ है, बट यहाँ पर ये किस डेंसिटी? Number density. नंबर Number डेंसिटी, राइट? Density. Basically they are talking about the number density, that is n upon v. ठीक है ना? Basically they are talking about the n upon v. ठीक है ना? All right. चलो. सर एक छोटा सा डाउट है सर, जैसे आपने कहा n अपॉन v जो यहाँ डेंसिटी, और उससे हम मतलब ये अंडरस्टूड है या? अरे अंडरस्टूड अभी अभी बताया ना, कैपिटल N डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम V इज स्मॉल नंबर डेंसिटी. सर ठीक है ना? वो ये रिलेशन तो क्लियर है, मगर यहाँ कहा ना कि द डेंसिटी ऑफ सॉलिड डबल, सर यहाँ से कैसे ये पूछ रही हूँ. डेंसिटी देखो, वही वही मैं आपको बता रहा हूँ. डेंसिटी ऑफ सॉलिड डबल, एक्चुअली क्वेश्चन में इनको पूरा लिखना चाहिए था. अंडरस्टैंड कहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, यही मैं आपको बता रहा हूँ. डेंसिटी ऑफ सॉलिड डबल होने का मतलब है द नंबर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज डबल. ठीक है ना? वो सॉलिड पूरे बल्क की बात नहीं कर रहा है, वो उसको डबल नहीं कर रहा है. ठीक है ना? बात ध्यान से समझना. द नंबर डेंसिटी, बेसिकली दे आर सेइंग that capital N upon V, V is the volume here. Basically they are talking about the 3 dimension. ठीक है ना? 3 dimension की बात कर रहे हैं. V is the volume here, उन्होंने mention कर रखा है. So capital N upon V, that is let's suppose A is a lattice parameter n upon A cube. इसको हम small n लिखते हैं ना? That is saying कि पहले अगर वो small n था और बाद में वो डबल हो जा रहा है, तो Debye टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सर ऑप्शन बी आ रहा है सर. हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है. देखो जिसको नहीं हुआ है मैं उसको बता रहा हूँ. ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है थीटा डी. यू हैव टू फाइंड आउट द थीटा डी. थीटा डी इज व्हाट? डिवाइड टेम्परेचर, राइट? यस सर, डिवाइड एंड डिवाइड टेम्परेचर. एक मिनट एक से बात करने दो. थीटा डी इज अ डिवाइड टेम्परेचर, राइट? फॉर फाइंडिंग द डिवाइड टेम्परेचर you have to find out what? Debye frequency. यस सर. Because I Yes, told you the relation between the Debye temperature and Debye frequency is what? Theta d is equals to
H equal to H omega cut H equal to omega upon d d kb. by kb. kb, यही बताया था. So if you have to find the theta d, just first find out the omega d. ठीक है. और ओमेगा डी कैसे फाइंड आउट करना है, ये इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में हम करके आ रहे हैं. क्लियर है? Yes, sir. दिस इज योर डिस्पर्जन रिलेशन. This is your dispersion relation. And if they are talking about the 3 dimension, that means you have to take the GK DK is what? क्या लोगे आप? 0 to 3n. L upon L 2 pi upon की L power upon 2 pi whole 4 cube cube whole cube 4 pi 4 k pi square 4. k k square square DK. dk. यही लोगे आप? This is your GK DK relation. This is your dispersion relation, dispersion. right? First find out the G omega D omega. जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है ना, बिल्कुल वही कर रहे हैं. G omega D omega find out करोगे, right? And just we know that the number of quantum state between the range omega and omega plus d omega is represented by what? Dn. अभी बताया मैंने आपको. Yes, G sir. of G omega omega d omega dn. is equals to d omega is equals to dn. G omega d omega से आपको एक ओमेगा के टर्म्स में एक रिलेशन मिलेगा. Yes, sir. उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे फ्रॉम 0 टू डिवाई फ्रीक्वेंसी. इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे फ्रॉम 0 टू 3n, gn. राइट? और वहां से आपको n और l में एक रिलेशन बन जाएगा जो कि नंबर डेंसिटी बन जाएगा. एंड यू विल गेट अ रिलेशन फ्रॉम विद द डिवाई फ्रीक्वेंसी एंड नंबर डेंसिटी. एंड वंस यू गेट द रिलेशन फ्रॉम डिवाई फ्रीक्वेंसी एंड नंबर डेंसिटी, you will easily get the relation from divide temperature and number density. तो ये तो एक्सप्रेशन ऑलरेडी आधा तो दे दिया है, एक क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन दे रखा है, खाली इंटीग्रेट करके निकाल देना. क्या हो गया? सॉरी सर ये जो 0 to 3n एक्सप्रेशन 0 to g ओमेगा d ओमेगा ऑलरेडी क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है ये इंटीग्रेशन. अच्छा, ये दिया हुआ है. ओके खाली ओके, इंटीग्रेट. So Wait. we already found out the relation between omega d and n, na? Hence we can found the either d that we is saying. हाँ ठीक है, जैसे भी कर सकते हो, वो भी ठीक है. ठीक है ना? बट दिस इज एक्चुअली अ कंप्लीट मेथड. हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो. दिस इज जी ओमेगा इज गिवन. ठीक है ना? अब सॉल्व करो. बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? B है ना सर? बी ऑप्शन इज करेक्ट. बिल्कुल सही कह Yes, रहे हो. sir. आपको इसमें जाने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है ना? आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो. जी ओमेगा क्योंकि दिया हुआ है. बिल्कुल ठीक है. ठीक है, देखो मैं करके सॉल्व करके यहाँ दिखा रहा हूँ. ठीक है ना? आई एम सॉल्विंग हियर, प्लीज सी. G omega d omega, right? Now it's from 0 to 3n, and this is from 0 to omega d. What is the value of g omega? That is av omega square, right? So it will become 3n, and this will become 0 to omega d av omega square d of omega. ठीक है ना? इसको आप सॉल्व कर लो. So it will become 3n is equals to av and omega d cube by 3. यही बनेगा, है ना? So just put the volume in the denominator of n. It will become 3n by v is equals to a by 3 omega d cube. ठीक है ना? So you can also write like this. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. 3n upon v. It should be the 3 small n, that is the number density. a by 3 को आप कोई भी constant suppose करो. Let's suppose I am a dash I am taking, and this is omega d. है ना? क्योंकि हमें बेसिकली क्या डिपेंडेंस से मतलब है ना. कांस्टेंट फैक्टर तो वैसे भी कोई रोल प्ले नहीं करने वाला है. सो द ओमेगा डी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? n टू द पावर 1/3. 1/3. ठीक है? ओमेगा डी इज प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3, एंड वी नो दैट थीटा डी की बात कर रहा है ना, डिवाइड टेम्परेचर की बात कर रहा है. द थीटा डी इज इक्वल टू h कट ओमेगा डी बाई kb. ओमेगा डी और थीटा डी का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है. दैट मींस वी कैन आल्सो राइट दैट इज थीटा डी इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/3. दिस इज योर रिलेशन. और आपको ध्यान होगा व्हेन वी सॉल्व द डिवाई फ्रीक्वेंसी, डिवाई थ्योरी जब डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था ना कि आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है. ओमेगा डी इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/3. देखना
आई टोल्ड यू ना, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो ये डायरेक्ट यहां से भी आप कर सकते थे। हमेशा ध्यान रखना, थ्री इन द केस ऑफ थ्री डायमेंशन या थ्री डायमेंशन ना भी हो, डायमेंशन से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। द नंबर डेंसिटी विल बी ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल लाइक दिस। ओमेगा डी से जो नंबर डेंसिटी का रिलेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। देखो डायमेंशन से क्या फर्क पड़ रहा है, अगर इस 0 से 2n भी जाता तो भी कोई डिपेंडेंस पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता ना भाई, ये सब तो कांस्टेंट में मैनेज हो जाता है ना। तो डिपेंडेंस विल बी रिमेन सेम, ओमेगा डी विल बी प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/3। अगर आपको ये पता है और अगर आपको ये रिलेशन पता है, दैट इज डी बाई टेम्परेचर इज इक्वल्स टू h कट ओमेगा डी बाई के बी, यू कैन इजीली गेट दिस, ठीक है। आ रहा है सबका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? ना सर, बी ऑप्शन इज करेक्ट, या बी। ओके, now let's solve first last question, December 2018. Sorry, December 2018. The dispersion relation of the optical phonon in a cubic crystal is given where omega naught and a are positive constants. The contribution of the density of state due to these phonons with a frequency just below omega naught is proportional to. देखो, just below omega naught इन सबको भूल जाओ, basically you have to find the what density of state, ठीक है ना। आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट फाइंड आउट करना है, प्लीज फाइंड आउट। आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट फाइंड आउट कर लोगे। ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। ऑप्शन ए आ रहा है, हाँ ठीक है, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा पावर 1/2। अभी सॉल्व किया है आपने या पहले से ही कर रखे थे? सर अभी क्या? गुड गुड, वेरी गुड। प्लीज सॉल्व एवरीवन। सर होल प्रोसेस देखिए बस, सॉरी, डायरेक्ट डिपेंडेंस मैंने देखा बस, बाकी अच्छा एल क्यू वो टर्म सब इग्नोर कर दिया, कांस्टेंट लेके अल्फा लेके ऐसे सब किया। गुड गुड, मैं डिपेंडेंस पे बेसिकली वो बात कर रहा है। एक्चुअली यस सर। एक्चुअली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड इन क्लास, इफ यू सर रिमेंबर। ऑप्शन ए ना, या ऑप्शन इज करेक्ट। एक याद है, डिपेंडेंस से आ हमने रहा है। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था फॉर द एनर्जी डिस्पर्जन, E इज इक्वल टू ई नॉट, था ना, माइनस साइन के बाई 2 करके। यस जो सुबह की क्लास हुई थी, शायद संडे को हुई थी, उसमें हमने सॉल्व किया था, राइट, परसों की क्लास में सॉल्व किया था। बिल्कुल वैसा ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। ओमेगा इज गिवन एज ओमेगा नॉट माइनस ए के स्क्वायर, वेयर ओमेगा नॉट एंड ए आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, आर द पॉजिटिव कांस्टेंट। एंड सिंपल, 3D की बात कर रहे हैं ना। Yes, यस sir. सर। क्यूबिक लैटिस क्यूबिक क्रिस्टल, या क्यूबिक क्रिस्टल, दैट मीन 3 डायमेंशन। हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाल लोगे। डिस्पर्जन रिलेशन इज गिवन, द जी के डी के रिलेशन इज L upon 2 pi whole cube 4 pi k square dk, right? So first find out k from here. So it will become ak square is equals to omega naught minus omega. That means k square will become omega naught minus omega by a. ठीक है? And the k value will be 1 upon root a into under root omega naught minus omega. ठीक है? इसका अगर आप dk निकालोगे, then the dk will become 1 by root a into 1 by 2 root omega naught minus omega, है ना, and the constant will be 0 and this will become what, minus d omega, है ना, डायरेक्ट माइनस डी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, हाँ सर, लास्ट में भी एक minus राइट। है। सो जस्ट पुट द वैल्यू हियर, देखो ठीक है, वैल्यू पुट करके देखते हैं। सो द जी ओमेगा डी ओमेगा, it will become L cube
divided by 2 pi square, right? 2 pi square k square dk, that is omega naught minus omega upon a, the value of k square, and the value of dk is 1 by root of a d of omega upon omega naught minus omega power 1 by 2, and obviously there is a minus sign. ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, माइनस साइन से उतना कोई मतलब नहीं है. So finally the dependence, that is the density of state dependence, ओमेगा पे कैसा आ रहा है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 by 2 है, that means 1/2. ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा पावर 1 by 2. ठीक है, all right, one more question is there. शॉर्टकट से जल्दी आ रहा है. क्या हो गया, शॉर्टकट से जल्दी आ रहा है. डिपेंडेंस t is equal to 2 और 3 डायमेंशन का. शॉर्टकट से कैसा शॉर्टकट, अच्छा इस पे, हाँ, रूट ओमेगा इज इक्वल टू अच्छा अच्छा, हाँ ओमेगा हाँ रेज टू हाँ, t बिल्कुल by बिल्कुल 3/. बिल्कुल. अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, अगर ये कुछ ऐसा डिस्पर्जन रिलेशन होता, सी यहाँ पर तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो फिर आपका डिपेंडेंस बिल्कुल ठीक आ रहा है. शॉर्टकट से आपने किया क्या, रो ऑफ हाँ ओमेगा सर. इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ओमेगा टू द पावर डी बाई एस D माइनस 1, है ना, हाँ यस. डी बाई एस माइनस 1. तो यार एस वैल्यू इज 2, एस वैल्यू इज 2 is एंड द 3. डायमेंशन इज 3, दैट इज 3 by 2 minus 1, दैट इज 1 by 2, है ना. यहाँ से तो आपका आ गया, बट हमेशा ध्यान रखना, प्लीज एवरीवन रिमेंबर that this trick or this shortcut is applicable only when omega is proportional to k square, sorry k to the power s. ठीक है ना, ये चूंकि यहाँ पर कांस्टेंट था तो आपका आंसर ठीक आ रहा है. अगर ये ऐसा डिस्पर्जन रिलेशन होता, लेट सपोज ओमेगा इज इक्वल टू ए के माइनस बी के स्क्वायर, तो फिर आप नहीं लगा सकते थे. ठीक है ना भाई, ये भी तो Yes, sir. डिस्पर्जन रिलेशन है. ठीक है ना, तो आप इसमें आप s की वैल्यू क्या लोगे, यू कांट टेक वैल्यू ऑफ s डायरेक्टली हियर, यू हैव टू सॉल्व दिस, राइट. सो ये जो ट्रिक मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड या फिर related with a specific heat or density of state, it is only applicable when this dispersion relation will be there. Omega is proportional to k to the power s, right? Okay, let's solve last question. The speed of transverse elastic waves through the copper is 2.32 10 to the power 3 meter per second. कैसे होगा, कोई बताएगा ये कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन. कल फॉर्मूला लिखा था भाई, हाँ जो कल फॉर्मूला लिखा था भाई. एग्जैक्टली, जो कल आपको एक्सप्रेशन कराया था डिवाइड थ्योरी में, याद है आपको, वी हैव फाइंड आउट द रिलेशन 3n is equal to ये भाई 1/2/vt क्यूब प्लस 1/vl क्यूब वाला. yes. ठीक है ना, देखो इसमें ट्रांसवर्स वेलोसिटी और लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी दोनों ही अलग अलग सेपरेटली गिवन है आपको, एंड यू हैव टू फाइंड द डिवाई फ्रीक्वेंसी न्यू डी एंड डिवाई टेम्परेचर थीटा डी. अच्छा एक चीज आप लोग और ध्यान रखना क्वेश्चन में, एग्जाम में, राइट, कि जैसे अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आता है और इसने पूछा ही हैज आस्क्ड दैट फाइंड आउट द डिवाई फ्रीक्वेंसी, सो प्लीज इंश्योर करने लेना, प्लीज इंश्योर that what is the unit, whether they are asking in hertz or they are asking the unit of angular frequency. इस चीज को इंश्योर कर लेना. कई बार क्या होता है ना, many times they ask in the unit of hertz and student find out in terms of angular frequency and the answer got wrong. ठीक है ना, और वो ऐसा लिख के नहीं आएगा कि फाइंड आउट द एंगुलर डिवाई फ्रीक्वेंसी, जस्ट राइट, दे जस्ट राइट द डिवाई फ्रीक्वेंसी. तो इसीलिए किस यूनिट में आंसर करना है इसका भी आप ध्यान रखना, राइट. चलो यहां पर जो आपको निकालना है ना, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज.
You have to find the nu d in terms of hertz, in the unit of hertz. And the answer is, I'm writing the answer here. Nu d is equal to 6.97 into 10 to the power 12 hertz. And once you got the Debye frequency, easily you can get the Debye temperature. Sorry. The number density 8.5 into 10 power 18 at 28. 28 is this. It is 28. 8.5 10 power 28 atoms per meter cube. This was the relation, right? यही relation था? Yes, sir. Yes, you have to this relation actually. All the values given. You have to find omega d. कर लोगे आप लोग? होमवर्क में दे दें? ठीक है? आप लोग आंसर फाइंड आउट Yes. कर लेना. This is a homework, right? चलो आगे बढ़ते हैं. अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है हमारे पास. We can start the new chapter. So the chapter has been over, and we are going to start our new chapter, that is a free electron theory, right? Free electron theory. So as usual, before starting the chapter, we talk about the chapter, and we discuss that why basically this chapter or that chapter, basically why this is so important for us, why we are studying this. So basically the study of free electron theory gives us the electrical properties information. Not only the electrical properties, it can also give us the means information regarding the, you can say, thermal properties also. They can also give us information regarding the optical properties of the solid, and also for the magnetic properties of solid. All right, but we don't need to go in so much deep because that's not part of our syllabus. We have to just discuss the electrical property which we will get with the huge use of free electron theory. Actually, free electron theory chapter is not new for us. If I told you that the first time in your academic career you have studied it in class 12th, right? अगर आप अभी भी क्लास 12th का चैप्टर देखो, अगर आप उनका सिलेबस देखो, तो जो उनका थर्ड चैप्टर है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को यूज करते हैं, मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं. बट दे डिडंट टेक द नेम एज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, बस जस्ट उसको कॉन्सेप्ट वाइज समझा देते हैं. So actually this is not our new topic. We have already studied in our graduation or schooling also, right? And the aim of to study this topic is, with the help of the study of this theory, we will be able to find out the some electrical properties of the solid. All right. Basically this theory, this free electron theory, will be completed in 3 steps. All right. I'm writing the step one by one here. The first step will be the classical free electron theory. Classical free electron theory. Classical free electron theory.
We'll go one by one thoroughly, but I'm just giving you some information regarding the classical free electron theory. Basically, in 1900, there was a two scientists. One was Rude, जिसको आप ड्रूड बोलते हो, ड्रूड मॉडल. Actually, the name is Rude, D silent there. Okay, Rude and Lorentz. All right, Rude and Lorentz. These two scientists has explained some theory regarding the free electrons of the metal. Metals के free electron पर इन्होंने अपनी कुछ theory दी. And their assumption was the electron is behaving like a classical particle, or you can say electron is behaving as per the classical mechanics rules. ये इनका assumption था that the free electrons in metal behaving as per the rules of classical mechanics. क्या था rules, क्या इनका assumption था, क्लासिकल मैकेनिक्स में कैसे डील करेंगे वो हम इसका जब थॉरो स्टडी कल करेंगे तब देखेंगे. रूल्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, what they got, where the problem was actually coming, what was the limitation, ये सब हम देखेंगे. Okay, don't worry. So basically the classical free electron theory was given by Rude and Lorentz, as I said, and this theory explained the free electron in metal as per the rule of classical mechanics. अभी तक के लिए for the time being आप ये जानो. The next theory, इसी में ही in the chapter of free electron theory, the next theory is quantum free electron theory. This one is a classical free electron theory. The second one is quantum free electron theory. Quantum free electron theory. In 1928, there was a scientist, Sommerfeld. Sommerfeld gave the concept of quantum free electron theory. Gave the concept of quantum free electron theory. They have treated the electron as a, means you can say as a quantum particles, and the behavior of free electron inside the metal, they have said that they will behave as per the quantum rules. Quantum rule means the energy will be quantized. Okay, they will follow the some quantum statistics. देखेंगे भाई इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही तो क्या फॉलो करेगा, फर्मी-डिराक statistics फॉलो करेगा. In the classical mechanics, the free electron was treating as the classical particle, so there the electron will follow the Maxwell-Boltzmann statistics. All right, what was assumption of the Sommerfeld, what was their theory? We'll see this in a very complete manner, in a thoroughly. All right, actually for your exam point of view, this theory is quite important. Quite important. Because in this theory, we will solve some relation, or we'll talk about something regarding the Fermi energy. And Fermi energy concept, if you see the previous year paper, is quite important. At least a single question will be there in your exam with the Fermi energy concept. So this theory is quite important. Okay, देखेंगे क्या है. And the third theory is, which is a topic of discussion of our next chapter, and the third theory of the free electron in 1928, this is also known as quantum theory, but or you can directly write as, this is a zone theory, और इसको हम एक नाम और देते हैं band theory. Band theory, right? Which is our next chapter, band theory of solid. And this was given by, in 1928, given by the Bloch. हम पढ़ते हैं ना Bloch theorem. This was a scientist, Bloch, that gave the concept of the band theory, and they said
that the electron inside the metal will move as per the periodic potential. Periodic potential के according वो move करेगा. आप देखोगे in the classical theory and in the Sommerfeld quantum theory, it will be assumed this is the assumption that there is a no potential. The potential is zero. But we will see in the band theory that there is a periodic potential in which electron will travel. ठीक है, ये तो पूरा चैप्टर ही है, अलग अलग ही चैप्टर है पूरा, इसको देखेंगे, थॉरली देखेंगे. So basically in the free electron theory, these three theory comes in the picture. Okay, so from tomorrow, one by one, we'll first discuss the classical theory, then the quantum theory, and at last the band theory. All right, so let's stop here. Jay sir is waiting for you. All right, see you guys tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.